Hello friends, welcome back to my educational channel GravityTech. In this series of videos, we are learning data structures using C language. And in previous sessions, we have already covered some topics like arrays, strings, static stack, static queue, as, and singly linked list. In today's video, we will cover doubly linked list along with the practical example implementation. If you find contents are useful, do subscribe to the channel, like the video and share it with other students so that it will help them too. Okay, now let's see what exactly the agenda of today's video. Okay, so what are the session objectives? So the session objectives are like what is a doubly linked list and what all where all it basically gets used, what all the basic operations are used on doubly linked list, implementation of doubly linked list of integers, then before that, maybe advantages, disadvantages of doubly linked list, and what exactly are we going to cover as a part of next session topic. So let's go ahead. So what is a doubly linked list? Doubly linked list hoti kya hai? So doubly linked list is basically again a type of the linked list only. It is a basically type of the linked list in which every node, every node will contain the information that is the data, then a pointer to the next object or the node and a pointer to the previous object. So a left pointer we call it as a right pointer and the data. So हर एक नोड में डबली लिंक लिस्ट के हर एक नोड में क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है जिसे हम डेटा कहते हैं. देन एक लेफ्ट पॉइंटर होता है, एक राइट पॉइंटर होता है. लेफ्ट पॉइंटर जो होता है वो प्रीवियस नोड को पॉइंट करता है और राइट पॉइंटर जो होता है वो अगले नोड को पॉइंट करता है. अभी आप अगर यहाँ पे देखोगे राइट नोड, ये जो लिंक लिस्ट है ये लिंक लिस्ट है थ्री नोड्स का, तीन नोड्स है यहाँ पे. आप फर्स्ट नोड अगर देखोगे हर एक नोड के अंदर है एक डेटा है. फर्स्ट नोड के अंदर डेटा है 100, सेकंड नोड के अंदर डेटा है 200, थर्ड नोड के डेटा अंदर डेटा है 300. ये है हेड द फर्स्ट नोड. सिंस ये फर्स्ट नोड है, फर्स्ट नोड के पहले कोई और नोड होगा नहीं. सो फर्स्ट नोड का जो लेफ्ट पॉइंटर है वो क्या रहेगा, नल. ओके, जनरली लेफ्ट पॉइंटर को बोलते हैं प्रीवियस पॉइंटर और राइट पॉइंटर को बोलते हैं नेक्स्ट पॉइंटर. राइट, सो इसका जो हेड रहता है उसका प्रीवियस हमेशा क्या रहता है, नल. सिमिलरली जो लास्ट नोड है, लास्ट नोड के आगे और कोई नोड नहीं है तो इसका जो नेक्स्ट रहेगा वो क्या रहेगा, नल. लेकिन उसका जो प्रीवियस है वो उसके प्रीवियस नोड को पॉइंट करेगा. सो व्हाट डज दैट मीन, राइट? सो एवरी नोड बेसिकली हैज थ्री डिटेल्स. one is the data information, left pointer that we call it is a previous pointer which points to the previous node, the next pointer which basically points to the next node, right? And then जो first node होता है उसका previous node null होता है और जो last node होता है उसका next क्या होता है, null. Okay, so इसका benefit क्या है? The benefit of this doubly linked list is that we can navigate in both directions. आप head से चालू करो और इस तरफ आप ट्रैवर्स कर सकते हो, आप टेल से चालू करो और आप रिवर्स डायरेक्शन में भी आ सकते हो, राइट? सो दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ डबली लिंक लिस्ट. वी कैन आल्सो डिलीट अ नोड विदाउट कंटेनिंग प्रीवियस नोड्स एड्रेस. जनरली हमको सिंगली लिंक लिस्ट में अगर नोड डिलीट करना होता है तो हमें प्रीवियस नोड किसी टेम्पररी नोड में कॉपी करके रखना पड़ता है, लेकिन इस केस में हमें वो सब कुछ नहीं करना पड़ेगा. नाउ लेट्स सी. So that's what it means, right? Node matlab kya? It's a single unit in a doubly linked list which contains data, previous and next pointer. So ये जो है, these are the nodes. There are three nodes. Next pointer जो होता है contains the address of the next node. यहाँ पे है इस node का address, यहाँ पे है इस node का address. इसके आगे कोई node है नहीं तो इसके next में आ गया null. Previous contains the address of previous node. इसका जो previous है इसके अंदर इसका एड्रेस है, इसका जो प्रीवियस इसके अंदर इसका एड्रेस है, इसके प्रीवियस के अंदर नल है बिकॉज द हेड डज नॉट हैव द प्रीवियस एलिमेंट. डेटा स्टोर्स द एक्चुअल वैल्यू, यहाँ पे 100, 200, 300 जो है जो एक्चुअल वैल्यूज है. एंड देन हेड इज बेसिकली द फर्स्ट नोड ऑफ द doubly linked list. You can also have it like the tail or last, that is what a last element of the doubly linked list. Now जब हम इंटीजर्स की doubly linked list implement करते हैं, right? Then how this node you will basically define programmatically. So it should be what struct node, एक data होता है int data, correct? Then struct node next and struct node previous. इसको हम
किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं. ओके, इट रियली डजंट मैटर because it's basically going to be a structure. Key value pairs रहेगा. Uh, so you can say like struct node star previous int data struct node star next. ऐसे भी लिख सकते हैं. The way actually it is mentioned here. Okay. Now next, what exactly are the characteristics of a doubly linked list? So very first characteristic is like each node contains two pointers. एक previous left pointer, right pointer जो हमने already देखा है, right? One pointing to the previous node, next one and the another one pointing to the next node. The first node's previous points to the null and the last node's next points to the null. ये भी हम लोगों ने देखा. The linked list can be traversed in both forward and backward direction. ये भी हम लोगों ने देखा. The size of the linked list can be dynamically adjusted based upon the number of elements can be added or removed. जैसे आप अगर कोई एलिमेंट रिमूव कर रहे हो लिंक लिस्ट में से तो उसका साइज ऑटोमेटिकली डायनेमिकली क्या होना चाहिए, रिड्यूस हो जाना चाहिए. और अगर आप नया एलिमेंट कुछ इंसर्ट कर रहे हो तो उसका साइज जो है डायनेमिकली वो इंक्रीज हो जाना चाहिए, हो जाता है, राइट. सो इन insertions and deletions can be performed in a constant time at both beginning and end. अगर आपको कोई नया एलिमेंट रखना है, नोड रखना है, एट द स्टार्ट एट द एंड में, राइट, बीच में नहीं बोल, एट द स्टार्ट एट द एंड में अगर आपको कहीं पे नोड डिलीट करना है कहीं या फिर इंसर्ट करना है उसके अंदर, राइट. सो दोज आर लाइक वेरी वेरी easy operations and can be done in within a constant time. Access और search operations जो होते हैं big O and time complexity होती है. So that means kind of one for loop where n is like number of elements in the linked list. It requires more memory to the as compared to the singly linked list. क्यों? क्योंकि singly list में linked list में एक ही पॉइंटर होता है. यहाँ पे हर नोड के अंदर और एक एक्स्ट्रा पॉइंटर होता है. So it needs extra memory allocation, right? Next. Now, what are the operations we can actually perform on the doubly linked list? The operations what we can perform on the doubly linked list is like insert. We can insert an element into the linked list. Now, how many ways we can do that? Similarly, we can have a delete operation. We can have the search operation. We can have the display operation. Now, as a part of insert, we can insert the new node at the beginning of the doubly linked list. We can also insert the new node at the end of the doubly linked list, and we can insert a new node at a specific position. Okay. When we say delete, we can delete the first node, we can delete the last node, or we can delete a specific node as well. When we say search, how we can search? We can search some specific element by value in that doubly linked list, or we can also search the element in reverse order. And the display means we can just display a doubly linked list either in the original order or we can display it in a reverse order. Okay, so these are the main operations what we can perform on the linked list: insert, delete, search, and display. Next, so implementation of doubly linked list of integers. Now let's see. हम अभी क्या करते हैं, एक प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी एक्चुअली वो प्रोग्राम लिख के रखा है. आई विल जस्ट मे बी हेल्प यू टू एक्सप्लेन कि डबली लिंक लिस्ट का जो प्रोग्राम हो किस तरह से लिखा हुआ है. ओके, सो सी, so doubly linked list is like these are the operations which we are going to perform. Is empty, is it empty? What is the size of the linked list, doubly linked list? Display in the forward order, right? जैसे है वैसे डिस्प्ले करो या फिर डिस्प्ले करो उसको रिवर्स ऑर्डर में. Insert new element at the beginning of the doubly linked list. Insert new element at the last of the doubly linked list. Insert new element after certain data. Let's see कि आपके पास इस तरह से लिंक लिस्ट है 12, 14, 78 और आपको 14 के बाद इंसर्ट करना है, राइट. सो आप क्या करोगे, लेट्स से नया एलिमेंट जो भी 23 है इसके बाद इंसर्ट करना है. दैट्स व्हाट यू मीन, वी मीन लाइक इंसर्ट आफ्टर डेटा. हम पोजीशन नंबर से भी इंसर्ट कर सकते हैं, राइट, दैट डिपेंड्स. डिलीट द फर्स्ट एलिमेंट, डिलीट द लास्ट एलिमेंट, और डिलीट द एलिमेंट विच है सर्टन वैल्यू. लेट्स से आपको यहाँ से 23 डिलीट करना है लेकिन आपको 23 का ना पोजीशन पता है कुछ नहीं. सो आप पहले सर्च करोगे 23 है कहाँ पे और फिर उस नोड को डिलीट करोगे. करेक्ट. नाउ वी विल कवर सम ऑफ दिस. नाउ इनमें से हम कुछ
कवर करते हैं. You can also search element from the beginning. We can also search the element from the last. Yeah. Now let's see. So stdio.h है जो include किया हुआ है. This is for printf and scanf functions, which are standard library functions. stdlib जो include किया हुआ है. This is because of this exit function. Okay. Now struct node. See. इस तरीके से struct node है. हम इसको इस तरह से भी रख सकते हैं ताकि अगर if you think read करने के लिए आसानी हो. So you can say like first previous pointer, then उसके अंदर data और फिर क्या next pointer. This is also possible. Now मुझे हर बार struct node लिखना नहीं था तो मैंने उसको type def कर दिया with node. Okay. Then we provide a menu to the people, right? मेनू मतलब क्या है कि लिंक लिस्ट के साथ आप क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, राइट? और आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है. सो दैट इज अ चॉइस इज इक्वल टू 0 जो यूजर इंटर करेगा, और ये है, और जो भी यूजर सिलेक्ट करेगा, राइट, दैट विल बी रिटर्न एज अ चॉइस. नाउ दिस इज अ मेनू व्हाट वी हैव. इफ यू look at it, right, doubly linked list menu, very first, if you select the one option, it will insert the element at the beginning. If two option is selected, it will insert the element at the last. If option 3 is selected, it will insert the element after certain element. So already existing element आपको पता है, उस element के बाद आपको अगर कोई नया element insert करना है तो वो भी कर सकते हो आप. Delete the element from the beginning, the first element. Delete the element from the last. Delete the last element. Delete that element with the data value. कोई particular data value का element लेके delete करो. Search an element with the in a linked list. Linked list के अंदर कोई एक element दिया होगा उसको search करो. राइट, आप इसको बैकवर्ड सर्च भी कर सकते हो, राइट, दैट आई विल कीप इट ऑन यू. लेंथ ऑफ द डब्ल्यू लिंक लिस्ट अगर फाइंड आउट करना है तो इंटर द 8. इफ यू वांट टू डिस्प्ले प्रिंट द लिंक लिस्ट इन नॉर्मल ऑर्डर, 9 ऑप्शन, and if you want to display it in reverse order, the 10 option, right? And then 0 means exit. So 0 to 10 options है. So user को हम एक prompt देंगे, enter the choice 0 to 10. User will enter that choice, will scan that using the %d and put it into the choice. So अभी अगर यूजर के पास चॉइस है 0 to 10, हो सकता है यूजर 0 to 10 के आगे का या फिर कम नंबर भी दे दे, तो हमको चेक करना है. अगर जो यूजर ने एंट्री किया है 0 से छोटा है या फिर दिस इज और 10 से बड़ा है, then printf incorrect choice, re-enter the correct choice, right? And then this loop should continue until the user enters something in between 0 to 10, correct? So जब तक करेक्ट चॉइस यूजर इंटर नहीं करता तब तक ये वाला फंक्शन चलता रहेगा. Now let's go to the main first, right, and then we'll go here. So see, here is a main function. मेन में अभी डबली लिंक लिस्ट है, इसका मतलब हमको एक हेड चाहिए जो शुरुआत के नोड को पॉइंट करे, एंड द लास्ट चाहिए जो लास्ट नोड को पॉइंट आउट करे, राइट? सो दैट्स व्हाई हेड मींस पॉइंटिंग टू द फर्स्ट, लास्ट मींस पॉइंटिंग टू द लास्ट. नाउ व्हाई दिस मोर मींस, राइट, हो सकता है कि अभी हमने जो प्रोग्राम लिखा है, राइट, वो एक ही ऑपरेशन के लिए हो, लेकिन अगर व्हाट इफ अगर यूजर बहुत सारे ऑपरेशंस करना चाहता है तो यूजर को तब तक पूछना है, भाई आपको एग्जिट होना है या और कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करने, एग्जिट होना है या फिर और कोई ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने. सो इसीलिए व्हाइल लूप है. देखिए, व्हाइल मोर, जब तक मोर का वैल्यू 1 है, नॉन जीरो है, तब तक ये लूप कंटिन्यू होगा, राइट? देन इट बेसिकली कम्स टू स्विच, करेक्ट? नाउ सी, सो मोर का वैल्यू ले लिया. मोर का वैल्यू कहां से आएगा? यहाँ पे. सी, डू यू वांट टू परफॉर्म मोर ऑपरेशंस? अगर 0 इंटर किया तो नहीं, 1 इंटर किया तो यस. सो जैसे ही यहाँ पे 0 इंटर किया तो व्हाइल लूप क्या हो जाएगा? इनवैलिड. तो व्हाइल लूप के बाहर आ जाएंगे. अगर 0 नहीं इंटर किया तो इट विल एक्चुअली गो अगेन इन द व्हाइल लूप. नाउ ये जो मेनू है, मेनू से जो भी 0 to 10 वाला जो आंसर आता है वो यहाँ पे कैप्चर होता है, स्विच केस को दिया जाता है, फिर जो भी नंबर आता है उस हिसाब से स्विच केस आगे केसेस में जाती है, राइट? लेट्स से नाउ, सो केस 1, केस 2. इफ यू लुक एट हियर केस 1, राइट, 1 क्या है? इंसर्ट द एलिमेंट एट फर्स्ट, बिगिनिंग.
So insert at first, insert at last, case 2, insert data element after the given element. कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एलिमेंट दिया होगा उसके बाद में इंसर्ट करना है. Delete from the beginning, delete from the last, delete the particular data element. Forward search, right? Search for particular element from the beginning. Then what is the length of the doubly linked list? Display forward. So whatever current sequence is, right, in that sequence display that. Display backwards, then display in reverse order, right? These are the 10 things. Now let's look at one by one, right? We have one like functions for everything. Now how to check is empty? Is empty means if head is equal to null, it will be empty, right? Obvious. So return head is equal to null. Now insert at first, beginning में insert करना है. See, अगर आपको इंसर्ट करना है तो आपको क्या नया नोड होना चाहिए आपके पास, राइट? सो उस नए नोड के लिए नोड स्टार न्यू न्यू नोड एक पॉइंटर ले लिया, लेकिन ये नोड डिफाइन नहीं हुआ है. तो इसको अगर डिफाइन करना है तो हमको उसके लिए मेमोरी एलोकेट करनी है. सो मैलॉक विल हेल्प टू एलोकेट द मेमोरी. कितनी मेमोरी एलोकेट होगी? साइज ऑफ नोड, मतलब जो नोड डेटा स्ट्रक्चर है उसका साइज का एक स्पेस एलोकेट होगा, राइट? फिर वो जो स्पेस है उसको वो एक्चुअली रिटर्न करता है void star. So that will be converted to what? Typecasted to node star, and then that complete memory, new memory location where nothing is there until now, that location address will actually be stored here. Now since new node is a kind of a node type, right? So it will have the next pointer, it will have the previous pointer as well. And now as we want to insert into the beginning, अगर हमको उसको शुरुआत में इंसर्ट करना है, लेट्स से 12, 34, 25 है, और हमें नया एलिमेंट इंसर्ट करना है लेट्स से 45, तो इस एलिमेंट को हमें यहाँ पे रखना है, करेक्ट? सो वी बेसिकली नीड टू हैव लाइक दिस 12, 34 एंड 25. तो ये कैसे होगा? सो ऑब्वियसली ये हेड को पॉइंट होना चाहिए. सो वी बेसिकली नीड टू हैव इसका जो प्रीवियस है वो क्या होना चाहिए? नल होना चाहिए. सो हम लोगों ने एक्चुअली दोनों को नल रखा है शुरुआत में, न्यू नोड नेक्स्ट एंड प्रीवियस बोथ आर नल. नाउ हमको अगर सी वी वांट टू बेसिकली इंसर्ट दैट इनटू द फर्स्ट, राइट? सो हमको हेड लगेगा मोस्टली, लेकिन व्हाट इफ हेड इज नल? अगर हेड नल है मतलब क्या? उस लिंक लिस्ट में कुछ है ही नहीं, करेक्ट? सो इफ हेड इज इक्वल टू नल, इसका मतलब लास्ट भी नल है. अगर हेड नल है तो लास्ट भी नल ही रहेगा. सो स्टार हेड इज इक्वल टू स्टार लास्ट इक्वल टू न्यू नोड. तो उसमें नया नोड जो है उसका एड्रेस खाली हेड में चला गया. अभी उस लिंक लिस्ट में, डब्ल्यू लिंक लिस्ट में क्या है? एक नोड है. अगर वो नल नहीं है, इसका मतलब उसके अंदर ऑलरेडी कुछ ऐसे वैल्यूज है, तो क्या होगा? सी, सो न्यू नोड नेक्स्ट विल बी अ हेड, स्टार हेड जो है न्यू नोड का. ये न्यू नोड है, राइट? सो न्यू नोड का नेक्स्ट जो है हेड है. सो न्यू नोड का नेक्स्ट इसको पॉइंट करेगा. ओके, that 12 in this list. Then star head previous will be new node because this is head. ये अभी भी head है, ये नया node है. So नया node का next will point to the head. Okay, and then head का previous will point to the new node. And then at the end, once that both things are linked together, that means we can say star head is equal to what? New node. Okay, so this is what the insert at the first. Now what is the insert at the last? मतलब last में insert करो. अभी लास्ट में हमारे लिए हमारे पास वी डू हैव द लास्ट पॉइंटर एज वेल. सी, सो यहाँ पे आप लास्ट में इंसर्ट करो, कहीं और जगह पे इंसर्ट करो, या फिर बिगिनिंग में इंसर्ट करो, आपको नया नोड तो लगने ही वाला है. सो वेरी फर्स्ट थिंग, व्हेनेवर यू वांट टू इंसर्ट, राइट, यू शुड बेसिकली हैव द मेमोरी एलोकेटेड फॉर द न्यू नोड, हैव दैट असाइन टू द न्यू नोड, एंड देन उसके जो नेक्स्ट एंड प्रीवियस है, बोथ शुड बी नल टू. और एक नया नोड होना चाहिए जो एक्चुअली जस्ट ट्रैवर्स करने के लिए यूज हो. सिंस हमें एंड में इंसर्ट करना है, सो वी शुड बेसिकली हैव दैट टेम पॉइंटिंग टू द लास्ट, करेक्ट? देन इंटर द डेटा टू बी इंसर्टेड, करेक्ट? तो न्यू नोड हो गया. लेकिन अगर लास्ट नल हुआ तो क्या? अगर लास्ट नल है मतलब क्या? हेड भी नल है, इज इट?
सो अगर लास्ट नोड है, हेड भी नल है, इसका मतलब क्या होगा कि डबली लिंक लिस्ट क्या है, एम्प्टी है। सो इट्स वेरी इजी, जस्ट जो नया नोड है उसको स्टार हेड और स्टार लास्ट दोनों पॉइंट कर दो। दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द लिंक लिस्ट नाउ, करेक्ट। नाउ अगर लास्ट नल नहीं है तो क्या, सी अगर लास्ट नल नहीं है तो क्या, सो लास्ट का जो नेक्स्ट है दैट विल बी न्यू नोड लाइक दिस। सी अगर ऐसा है, नाउ यू बेसिकली वांट टू इंसर्ट 45 एट द एंड। सो ये जो है राइट, इसका नेक्स्ट अभी नल है, तो इसका नेक्स्ट कहाँ पे पॉइंट होना चाहिए, न्यू नोड को, राइट। सो स्टार लास्ट नेक्स्ट इज इक्वल टू व्हाट, न्यू नोड। एंड देन ये जो नया नोड है इसका प्रीवियस किससे पॉइंट होना चाहिए, 23 को। सो दैट्स व्हाई वी से न्यू नोड प्रीवियस इज इक्वल टू व्हाट, स्टार लास्ट, इज इट। एंड देन नाउ लास्ट यह पहले यहाँ पे था, लेकिन अभी ऑलरेडी ऑलरेडी और एक एलिमेंट हमने ऐड कर दिया, सो दिस शुड बेसिकली बी द लास्ट नाउ। सो स्टार लास्ट इज इक्वल टू न्यू नोड, इजी। नाउ नेक्स्ट, इंसर्ट डेटा आफ्टर गिवन एलिमेंट। कोई तो एक एलिमेंट दिया होगा, उसके बाद हमको डेटा क्या करना है, इंसर्ट करना है, करेक्ट। सो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि डू वी रियली हैव द लिंक लिस्ट की जहाँ पे हम सर्च कर सके, मतलब एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है, व्हाट डज दैट मीन, वी रियली कैन नॉट सर्च एनी एलिमेंट, करेक्ट। सो लेट्स सी नाउ, अभी यहाँ का सिनेरियो कैसा है, यहाँ पे I'll tell you 12, let's say 34, 56, 78, राइट। यहाँ पे what they are saying, insert the element after 56 ऐसे। सो जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट है दैट इज 56, उसके बाद में इंटर करना है इंसर्ट लेट्स से 28 आफ्टर, तो वो एट द एंड कैसा हो जाना चाहिए, 12, 34, 56, 28 एंड 78, इस तरह से। गॉट इट, दिस इज व्हाट इट इज। नाउ so I have a temp which will actually point to the head, new node will point to the null, right? And then existing data element will be the one, right, which user will tell, okay, after 56, so 56. So ask user that question, enter the existing data element from the linked list which you would want to insert after, right? So %d address of operator, whatever new number will be entered by user, that will basically go into the existing data element, right? Now हो सकता है कि हेड नल हो, करेक्ट। अगर हेड ही नल है तो इसका मतलब द लिंक, so doubly linked list is basically empty. Can we now basically delete it, any element? No. Sorry, so can we insert element after given position, right? No, because since there is no element in the doubly linked list, right, we really cannot do that operation. So we should simply say linked list is empty, so not possible to search of existing element. Now अभी लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब हमें लिंक लिस्ट के अंदर देखना है कि वेयर इज दैट वैल्यू, और वैल्यू है भी नहीं है, राइट। सो सी, सो जैसे जब तक टेम्प नल नहीं होता तब तक हम टेम्प क्या करेंगे, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट। सो ऐसा एक वक्त आएगा, सो लेट्स से यहाँ पे टेम्प है, टेम्प है क्या 28, नहीं, टेम्प नेक्स्ट, टेम्प है क्या, नहीं 20, 28 नेक्स्ट, नेक्स्ट, लाइक दिस। यहाँ पे मिला, ओके, नाउ वी गॉट टेम्प डेटा इज इक्वल टू व्हाट, एग्जिस्टिंग डेटा एलिमेंट, करेक्ट, लेट्स से 28। So let's expand it, right? What exactly it does. Now, since we want to insert the element, we would need a memory allocated for the new node. Previous and next will be null. And then enter the new element to be inserted. User will enter the new element. That new element will basically go to what? New node and the data part. Correct. And then certain logic we will use to insert it, right? So सबसे पहले we'll check if star temp is equal to what? Star last. अगर लास्ट का एलिमेंट है तो क्या करना है, लास्ट स्टार लास्ट इज इक्वल टू व्हाट, स्टार लास्ट का नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड। इसका मतलब जस्ट इंसर्ट द न्यू नोड एट द एंड, नथिंग एल्स। इसको कहां पे इंसर्ट करना है, नए नोड में, एट द लास्ट में इंसर्ट करना है, जो हमने ऑलरेडी देखा है लास्ट फंक्शन में। अगर वैसा नहीं है, दैट मीन्स वी कैन एक्चुअली फॉलो दिस लॉजिक, टेम्प नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस इज इक्वल टू नोड। नाउ लेट्स सी,
अभी अगर इस तरीके से हम करना चाहे, राइट, लेट मी जस्ट मे बी शो यू डायग्राम। ये हो गया टेम्प, करेक्ट। ये इसका नेक्स्ट, ये इसका प्रीवियस, और ये इसका डेटा, एंड दिस इज योर टेम्प, जिसके आगे हमें नया नोड इंसर्ट करना है। दिस इज न्यू नोड, दिस इज द प्रीवियस वन, ये इसका क्या है, नेक्स्ट, और ये है डेटा। अभी हमको और एक एलिमेंट यहाँ पे, लेट्स से दिस, करेक्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट एंड डेटा। अभी ये जो नेक्स्ट है, इट इज पॉइंटिंग टू दिस, और इसका प्रीवियस जो है पॉइंटिंग टू दिस। नाउ समहाउ वी वांट टू इंसर्ट इट हियर, तो वो कैसे करना है? सो सी, टेम्प नेक्स्ट के प्रीवियस इज इक्वल टू न्यू नोड। सो ये टेम्प है, इसके नेक्स्ट का प्रीवियस, इसके नेक्स्ट का प्रीवियस will basically point to here, right? That is what new node को point करेगा। now new node previous is equal to temp, ये जो है ये point करेगा temp को। now new node next is equal to temp next, इसका जो next है ये temp के next को मतलब यहाँ पे point करेगा, right? and done। yes, one thing what we forgot, right? temp next is equal to what, new node। so temp next is equal to what, new node। so ये जो है, right, ये यहाँ पे break करके हमने यहाँ पे लगा दिया। easy। so this is how it is, inserting element at a certain, after certain element। okay, next, now how to display forward? display forward means start from the head and display till the end, जब तक हमको last मिल नहीं जाता, right, और null मिल नहीं जाता। so temp is equal to what, head। अगर temp null है तो linked list भी क्या है, null है, so nothing to print। नहीं तो, right, एक मैसेज देंगे यूजर को हम, well formatted output of doubly linked list is, then while temp is equal to not null, तो फिरता रहेगा, उस कंप्लीट लिस्ट को स्कैन करता रहेगा, राइट। सो इट विल फर्स्ट गो टू द फर्स्ट एलिमेंट, इट विल प्रिंट इट्स डेटा, देन इट विल गो टू द नेक्स्ट एलिमेंट, प्रिंट डेटा, नेक्स्ट एलिमेंट, नल है क्या, नहीं, प्रिंट डेटा, नेक्स्ट एलिमेंट, लाइक दैट। जब तक नल नहीं होता तब तक दिस विल कंटिन्यू एंड इट विल गो इन अ रिवर्स डायरेक्शन। सो we saw the display forward, display backward as well, right? Now let's look at the delete operations. You can delete from at the first element, that is beginning from the doubly linked list. You can delete at the last. You can delete certain data element, right? We can also forward or get the length. Now let's see. Delete at first means very first element you need to delete. So you will need the head and you will also need the last. Why? I'll tell you. Now have a node pointer to pointing to the head so that you can basically take care of deletion from the front. Now if temp is equal to null, what does that mean? There is no element to be removed. Why? Because it's the doubly linked list is itself empty. Now हो सकता है कि उस डबली लिंक लिस्ट में ओनली वन एलिमेंट हो, ज्यादा एलिमेंट्स ना हो, तब क्या करना है, राइट? सो तब हमें चेक करना है कि अगर हेड इज इक्वल टू लास्ट है, इफ हेड is equal to last है, so star head is equal to star last is equal to what, null। और जैसे यहाँ पे हम लोग नल कर दिया, राइट, जैसे यहाँ पे बाहर आएगा वो बोलेगा कि परसेंट डी एलिमेंट वाज रिमूव्ड फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द लिस्ट विद दिस डेटा एंड देन उस मेमोरी लोकेशन को फ्री कर दिया सो दैट इट वोंट बी अ मेमोरी लीक। लेकिन अगर एक से ज्यादा एलिमेंट्स है तो, अगर एक से ज्यादा एलिमेंट है तो व्हाट, स्टार नेक्स्ट का प्रीवियस इज इक्वल टू व्हाट, नल। क्योंकि अभी पहले लेट से इस तरह से लिंक लिस्ट है, हमको इसको रिमूव करना है, तो मतलब इसको हेड बनाना है। पहली बात तो उसका हेड बनाने के लिए क्या जरूरी है, उसका जो प्रीवियस है वो नल हो जाना चाहिए। सो स्टार हेड प्रीवियस इज इक्वल टू नल एंड देन स्टार हेड इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, स्टार हेड इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, मतलब ये हो गया हेड।
नाउ यू कैन बेसिकली सिंपली से फ्री टेम्प। करेक्ट, जो भी तुम लोगों ने यहाँ पे टेम्प के साथ किया, राइट, इफ इट इज फाउंड देन जस्ट डिलीट इट, दैट मीन्स फ्री द मेमोरी। नेक्स्ट, डिलीट एट द लास्ट, सेम है जैसे हम लोग अभी डिलीट फ्रॉम द फर्स्ट देखा। लास्ट एलिमेंट देखेंगे लिंक लिस्ट एम्प्टी है या नहीं ये देखेंगे। अगर एम्प्टी नहीं है तो उसमें एक ही एलिमेंट है क्या ये देखा जाएगा। अगर एक ही एलिमेंट है तो स्टार हेड स्टार लास्ट विल पॉइंट टू द नल अगेन, एंड देन उस मेमोरी को फ्री किया जाएगा। देन अगर वो एम्प्टी नहीं है, so this will be the logic now. So let's say, let me just maybe highlight it, right. This is the previous node in a linked list, right, and then this is your last node which is to be deleted, correct. This is the last node, this is the last node. Now we know that the next of this is what, basically null, but the previous of this is pointing to this, correct. So very first thing क्या करना है कि ये जो है temp previous का जो next है उसे क्या करना है, नल करना है। सो टेम्प के प्रीवियस का नेक्स्ट क्या करना है, नल। सो टेम्प जो ये है टेम्प के नेक्स्ट, टेम्प का प्रीवियस का नेक्स्ट, सो ये जो है ये हो गया नल, करेक्ट। नाउ ये जो लास्ट का प्रीवियस है ये वाला कट करना है, राइट, इसको भी क्या कर देना है, नल, राइट। दैट्स व्हाट द टेम्प इज, सी टेम्प प्रीवियस को नल किया मतलब लास्ट के प्रीवियस को नल कर दिया। अभी हमको लास्ट इसे नहीं करना है, लास्ट किसे करना है, लास्ट इज इक्वल टू लास्ट प्रीवियस। हाँ, लेकिन हम अगर हम लोगों ने पहले इसको इस कनेक्शन को निकाल दिया तो हमको लास्ट से प्रीवियस निकाल सकेंगे हम लोग, नहीं। सो बिफोर मेकिंग इट नल टेम्प प्रीवियस वी शुड से स्टार लास्ट इज इक्वल टू टेम्प प्रीवियस। सो ये वाला हो गया लास्ट, नाउ इसको क्या करेंगे हम, नल कर देंगे। सो नाउ दिस इज एन इंडिपेंडेंट वन which is actually temp, then we can free that temp, easy, that's how it is. Next, delete the data element, specific data element जो यूजर ने दिया हुआ है उस एलिमेंट को डिलीट करो। now how do we do that, right. so सबसे पहले हेड टेम्प में कॉपी कर लो, नोड स्टार टेम्प इज इक्वल टू स्टार हेड। तुम्हें कौन से एलिमेंट को डिलीट करना है वो डेटा एलिमेंट, अगर हेड है इसका मतलब क्या है, लिंक लिस्ट एम्प्टी है, देयर इज नथिंग टू डिलीट। एल्स इंटर द एलिमेंट विच इज टू बी डिलीटेड, यूजर को पूछा जाएगा कौन सा एलिमेंट है जो तुम्हें डिलीट करना है। इट विल से दिस इज द एलिमेंट, सो दैट एलिमेंट विल बी कॉपीड इनटू द डेटा एलिमेंट, एंड देन व्हाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, फिर वो ट्रैवर्स करेंगे जब तक हमको डेटा एलिमेंट मिलता नहीं तब तक टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट करते रहेंगे, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल। जैसे ही हमको एक वो एलिमेंट मिल गया, लेट्स से this is an example, let's say by right now assume you need to delete 67, करेक्ट। सो सबसे पहले टेम्प के अंदर क्या रहेगा, 12, इस 12 इज इक्वल टू 67 नहीं, तो टेम्प इज इक्वल टू व्हाट, टेम्प नेक्स्ट। सो टेम्प का आगे क्या वैल्यू रहेगा, 34। इस टेम्प इज इक्वल इस टेम्प डेटा इज इक्वल टू डेटा एलिमेंट, नो, सो इसका वैल्यू चला गया आगे और 45। इज इट इक्वल टू डेटा एलिमेंट, नो, और आगे चला गया टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट 67। इज इट दैट, यस, अभी वो इसके अंदर जाएगा। हाँ, इसके अंदर जाने के बाद चेक करेगा इस टेम्प इज इक्वल टू हेड, मतलब पहला एलिमेंट क्या जो डिलीट करना है, जो सबसे पहले ही मिल गया हमको, राइट। अगर 67 यहाँ पहले रहेगा, राइट, सो इट विल बी हेड। सो उस कंडीशन को हमको पर्टिकुलरली क्या करना है, हैंडल करना है। अगर हेड है और अगर वही लास्ट भी है, इसका मतलब क्या उसके अंदर एक ही एलिमेंट था और उस एलिमेंट को हम लोगों ने रिमूव कर दिया, मतलब से स्टार हेड एंड स्टार लास्ट एज व्हाट, नल। लेकिन अगर स्टार हेड इज इक्वल टू स्टार लास्ट नहीं, मतलब वो ऐसी डब्ली लिंक लिस्ट नहीं जिसके अंदर खाली एक एलिमेंट है, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स। सो अभी हमको और जो एलिमेंट है उसको हमको हेड से ही निकालना है अभी, बिकॉज हेड में हमको मिल गया। सो स्टार हेड
का जो नेक्स्ट है उसका प्रीवियस विल बिकम एक्चुअली नल, क्योंकि पहले उसका प्रीवियस किसको पॉइंट कर रहा था, हेड को, राइट, लाइक दिस. So if this is your head as of now, and this is your head next, correct. So head का next का previous, करेक्ट, वो अभी इसको पॉइंट कर रहा है, लेकिन हमको इसको क्या करना है, नल, करेक्ट. एंड देन स्टार हेड इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट. स्टार हेड इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट. ये टेम्प है तो ये वाला भी हेड हो जाएगा, करेक्ट. नाउ सो इफ इट इज द फर्स्ट एलिमेंट, ओके, दिस इज अ टेम्प और उसको हम यहाँ पे फ्री कर रहे हैं, सी दिस फ्री इज कॉमन टू ऑल. नाउ इफ दैट्स नॉट द केस, राइट, अगर फर्स्ट एलिमेंट नहीं मिला तो हो सकता है बीच में कहीं मिले, हो सकता है लास्ट में मिल जाए, स्टार टाइम इज इक्वल टू स्टार लास्ट, एकदम लास्ट वाले एलिमेंट मिले तो इट्स वेरी इजी. अगर लास्ट वाला एलिमेंट है, राइट, सो ए वाला एक बॉक्स, ए वाला एक बॉक्स, दिस इज योर लास्ट और टेम्प, करेक्ट. अभी हमें इसको निकालना है, इसका मतलब इसका जो प्रीवियस है इसको नल करना है, पहली बात. जो इसके पहले वाला है उसका नेक्स्ट है वो भी क्या होना चाहिए, नल, और फिर उसको रिमूव करो, सी. सो स्टार्ट लास्ट इज इक्वल टू टेम्प प्रीवियस, सो स्टार लास्ट विल बी टेम्प प्रीवियस. अभी लास्ट हो गया ए, राइट. एंड देन टेम्प प्रीवियस इज इक्वल टू नल. ये जो टेम्प है इसका प्रीवियस क्या हो जाएगा, नल को पॉइंट करेगा, एंड दैट्स डन. देन यू कैन बेसिकली सिंपली से फ्री टेम्प, इजी. सो एल्स पार्ट विल बी व्हाट, कि ना है, ना फर्स्ट एलिमेंट है ना लास्ट एलिमेंट, इसके बीच में कहीं पे एलिमेंट है. सो स्टार टेम्प नेक्स्ट का प्रीवियस विल बी व्हाट, टेम्प प्रीवियस, एंड like this. Maybe let me show you. This is 1, this is 2, this is 3. तीन नोड्स है. अभी हम इसको रिमूव करना है, सो दिस इज अ टेम्प. नाउ हमें पता है कि इसका जो नेक्स्ट है ये इसको पॉइंट कर रहा है, सो वी शुड से कि इसका जो नेक्स्ट है उसको पॉइंट करना चाहिए. सो टेम्प के प्रीवियस का नेक्स्ट, करेक्ट, टेम्प के प्रीवियस का नेक्स्ट शुड बेसिकली पॉइंट टू ईयर. सी, टेम्प के नेक्स्ट का प्रीवियस विल बी टेक्स्ट प्रीवियस. ओके. नाउ नेक्स्ट टेम्प के प्रीवियस का नेक्स्ट विल बी टेम्प नेक्स्ट, राइट. सो दैट्स हाउ इट इज. सो ये हो गया, एंड देन एट द एंड यू कैन से परसेंट डी, राइट, element is deleted from the linked list. Next is a forward search. If you want to forward, if you want to search element, right? So if you want to search the element in a original direction, right, so that's what the function I have written here, forward search. It will need the head because we want to search in the same direction, right. So for traversing purpose, have a temporary node pointing to the head. Now what exactly we want to search, that search data. Let's say you have this list, right, 34, 45, 67, 78. This is how, let's say you have. Then if you want to search for 45, then where this 45 will be stored, this one. Now if you want to say which position, third position, so you would say position is equal to what, 0, right. So the very first thing, if you want to search and if the linked list is empty, right, would you be able to search? No. That means if head is equal to null, right, linked list is empty and nothing to search. If linked list is not empty, right, then what is the logic you will use for search? You will ask for the user which is the element you want to search in the doubly linked list. So that whatever data user will enter, that will basically be stored into the search data. Now traverse it. इस पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करो जब तक एंड का एलिमेंट आ नहीं जाता. सो while temp is not equal to null, right, position is equal to plus plus. सो 12 पे मिला नहीं तो पोजीशन प्लस हो गया, 34 पे मिला नहीं
45 मिल गया, right? So what it will be? So at that time it will say temp data is equal to what? Search data मिल गया. So मिलने के बाद क्या करना है? Print है %d found at the position %d. So search data हमको position पे मिल गया. And then return from here because we found it, right? And then if not found, जब तक मिलता है तब तक temp is equal to temp next. अगर ये पूरा while लूप होने के बाद भी अगर temp is equal to null तक यहाँ तक पहुंच गया, इसका मतलब उसके पास उसको डेटा मिला ही नहीं. So we should basically say printf %d is not present to the doubly linked list, right? But what is %d here, right? We have missed a search data, correct? Okay. Now this was a forward search. Now what about the length? If you want to check what is the length of the current linked list, so you can say get length and node star head, because we will count the length of the linked list using the head pointer. So have some temporary pointer which will point to the head. Have length is equal to what? 0. And जब तक temp is equal to null नहीं आता वो पूरी linked list को traverse करो, right? Then so length is equal to length plus plus and temp is equal to temp next. So let's say अगर ऐसी linked list है, right? So पहले length तो 0 रहेगा, यहाँ पे temp null है क्या? नहीं, तो length हो गया 1, right? Then temp is equal to temp next. Length temp null है क्या? नहीं, 2 3 4, so it will return 4. Okay, right? So this is how the code is, right? Now one thing I have missed here, I have missed here the case 0, which is like exit, right? We should have that exit which will tell the compiler the user has entered the 0 and we need to come out. So this is all together almost like 383 line code, right? Let's try to execute it and see how it runs. Yeah. So this is how it is. If you look at here, right? This is the menu we have got. Insert the element at the beginning, element last में insert करो, कोई specific element के बाद element insert करो, delete पहला वाला element delete कर दो, लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट करो. 6 का मतलब रहेगा डिलीट एलिमेंट विद सम डेटा वैल्यू. 7 का मतलब रहेगा सर्च द एलिमेंट विद इन द लिंक लिस्ट. लेंथ ऑफ द डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या है? डिस्प्ले फॉरवर्ड इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, डिस्प्ले इट राइट, डिस्प्ले इन अ रिवर्स डायरेक्शन. एंड इफ इट इज जीरो, एग्जिट. थोड़ा सा उसमें स्पेस इसलिए रखा है ताकि वो नजर में आए कि आपको जीरो एंट्री किया तो यू विल बेसिकली कम आउट, राइट? लेट्स ट्राई टू डिस्प्ले इट, राइट? डिस्प्ले फॉरवर्ड से लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, उसमें कुछ है ही नहीं तो डिस्प्ले क्या करेगा? करेक्ट. नाउ लेट्स से we want to enter the element now, right? So which enter the element मतलब फर्स्ट पे इंसर्ट करना है. लेट्स से 34, करेक्ट? यस. अब ये अभी डिस्प्ले करके देखते हैं. से 34 हम लोगों ने एंटर किया था, 34 लिंक लिस्ट में आ गया. फिर से इंसर्ट करते हैं. अभी इंसर्ट करते हैं लास्ट में. ओके, वन मैंने ऑलरेडी इंटर कर दिया, मतलब फर्स्ट में इंटर करना. 34 के पहले आ जाएगा वो. इट्स -12. नाउ इफ यू ट्राई टू डिस्प्ले इट, राइट, इट विल से -12 34. लेकिन अगर आप लास्ट में अगर इंसर्ट करोगे तो 34 के बाद आएगा. लेट्स मे बी ट्राई टू सिलेक्ट 2. नाउ डेटा टू बी इंसर्टेड एट द लास्ट, लेट्स से 56. सो इफ आई ट्राई टू डिस्प्ले इट, राइट, -12 34 56, ये हो गया लास्ट वाला. अभी इंसर्ट द एलिमेंट आफ्टर सर्टेन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के बाद में डेटा इंसर्ट करो. लेट्स से 34, 34 के बाद हमको इंसर्ट करना है 48, करेक्ट? सो we will have third option from the menu. Now enter the existing element from the linked list after which you would want to insert. हमको 34 के बाद इंसर्ट करना है. लेट्स से 34, 34 के बाद इंसर्ट करो. नया एलिमेंट हमको इंसर्ट करना है 48, लेट से, राइट? अगर हम 48 इंसर्ट करेंगे तो ये लिंक लिस्ट क्या हो जाएगी? -12 34 48 एंड 56, करेक्ट? नाउ लेट्स ट्राई टू डिस्प्ले इट. इज इट? सी, सो आ गया 48 यहाँ पे 34 के बाद में. Now before delete, let's maybe try to display in a reverse order, right? So अभी display कैसे होना चाहिए? 56 48 34 -12, correct? So display in reverse will be 10. See,
56, 48, 34 माइनस 12। डिस्प्ले रिवर्स में भी हो गया, फॉरवर्ड में हो गया। लेंथ देखते हैं, इसका लेंथ क्या आना चाहिए, 4। सो लेट्स से लेंथ ऑफ द, इसके लिए क्या 8 ऑप्शन है। सो लेंथ इज व्हाट 4। अभी ये वाले 3 हो गए राइट, एंड देन फर्स्ट 3 भी हो गए। अभी हो गया सर्च। लेट्स ट्राई टू सर्च द एलिमेंट। अभी हम सर्च करते हैं, लेट्स से 34। ये रिवर्स में है तो 34 की सेकंड नंबर पे आना चाहिए। सो सर्च मींस व्हाट, लेट्स से सेवंथ ऑप्शन, राइट, सेवंथ ऑप्शन। what I want to search is 34. So 34 is found at the position 2, दो नंबर की पोजीशन पे 34 है। So ये भी हो गया। Now let's try to delete at the first. डिलीट करने के पहले हम उसको फिर से एक बार डिस्प्ले कर लेते हैं। ये वाला हमारा एक्चुअली लिंक लिस्ट है। अगर हमने फर्स्ट एलिमेंट डिलीट किया तो -12 डिलीट हो जाना चाहिए, राइट। सो लेट्स से डिलीट फ्रॉम द फर्स्ट के लिए ऑप्शन है 4। सो when we enter the 4, 12 is deleted from the list, -12 is deleted। ये टी टैब की जगह पे ओनली टी हो गया है। अगर स्लैश टी रखता तो वहां पे टैब आ जाता था। ओके, सो दैट्स जस्ट अ काइंड ऑफ टाइपो मिस्टेक। सो 12 -12 डिलीट हो गया। अभी हम इसको डिस्प्ले करके देखते हैं। सी -12 इज गॉन। नाउ लेट्स ट्राई टू डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम द लास्ट। 56 को डिलीट करते हैं बाय 5, राइट। सो 5, लेट्स ट्राई टू डिलीट फ्रॉम द लास्ट 5, right, it's already deleted 56. So if 56 is deleted, right, let's try to print it now. See, 34 and 48, correct. Now delete element after certain element, किसी certain element के बाद वाला element delete करो। Let's do one thing, right, let's insert one element, right. Let's maybe insert the element 55. Now if you look at the linked list is what, 34, 48, 55. Now let's try to delete the element with the value 48. So that is 6. So 6, 48 एलिमेंट। सो 48 इज डिलीटेड। अभी अगर 48 डिलीट हो गया तो क्या आएगा, 34 एंड 55। सो व्हेन यू ट्राई टू डिस्प्ले 34 एंड 55, करेक्ट। नाउ लेट्स ट्राई टू डिलीट ऑल द एलिमेंट्स, करेक्ट, मींस वन बाय वन, राइट। लेट्स से आई डिलीट इट फ्रॉम द फर्स्ट 4 ऑप्शन, right, 34 deleted. I again delete it from the first, right, 55 deleted. Now if I want to display the list, because everything is deleted, linked list is what, empty now. Easy. So this is how, and now I'm entering 0 because I want to exit, correct. So this is how you can basically implement the doubly linked list. Now let's go back to the presentation, right. So what are the applications of doubly linked list? So doubly linked list can be used in navigation systems where both forward and backward traversal is required. That's one of the application. It can be used to implement the different tree data structures, right, where maybe graphs as well. If you look at डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है, इनकमिंग एज भी होती है और आउटगोइंग एज भी होती है। तो उस वक्त यू बेसिकली नीड अ डबली लिंक लिस्ट। इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू implement undo and redo operations on any of the application. Some real-time applications are like doubly linked lists are used in web pages to navigate in both directions, forward or backward direction. Backward direction you can consider as the previous pointer, whereas forward will be like a next one. It can also be used in games like a deck of cards. These are the kind of applications of doubly linked list. Now, what are the advantages of doubly linked list? So the advantages of doubly linked list are like, these are efficient traversal in both forward and backward direction. With doubly linked list, you can traverse in the list in both forward as well as backward directions, which can be useful in certain applications. Dynamic size adjustment. The size of the list can be easily adjusted based upon the number of elements added or removed, making it a flexible data structure. Constant time insertion or deletions. For insertions and deletions at the can be performed in a constant time at both beginning and end of the list, right? Not at the in the beginning, in middle. Easy to implement. The doubly linked list is basically relatively easy to implement compared to other data structures like arrays or trees. Efficient memory utilization. The doubly linked list can be used to manage memory more efficiently as the nodes can be easily added or removed as needed. Okay. Now, what are the disadvantages of a doubly linked list?
it basically requires memory, more memory, because it has extra pointer for the previous one, right? Then slower access and search times. Access and the search operations have the like big O of n time complexity, where n represents the number of elements in the doubly linked list. This can result in slower performance compared to other data structures like arrays, trees, and especially for the larger lists. It also has the complex implementation. The implementation of the certain operations such as sorting can be more complex compared to the arrays or other data structures. Higher overhead for the updates. Updates to the list such as inserting, deleting element can be a more time consuming compared to the arrays or other data structures. Now, pointer management, as you have seen, right, we have to play a lot of with the pointers, next pointer, previous pointers for each node. So the management of pointers in a doubly linked list can be a more complex compared to the other data structures. And mistakes in the pointer management basically can result in serious errors, exceptions in the program. So be aware of that and be careful of using pointers, right? Now that's all actually I had it from this video. In next video we will look at the dynamic stack implementation, right? How you can implement the stack using the linked list in a dynamic way. And then after that we will have the dynamic queue, right? And then the trees and also all, right? Okay, so guys, if you like the video, right, if you like the contents, do click on the like button of the video, subscribe to the channel so that you get updates about the new videos, and then share it with others as well, so that other people will also get benefit of the same. Okay, I wish you happy learning with the GravityTech. Thank you.